Hi everyone, apana manaka samasta inku ehi video re bahut swagatata. Ajira ehi video re ami apana manka sahita public administration. Ra theoretical perspectives ra examine the human relationship theory of Elton Mayo ra long question answer ra notes share and discussion kariba ithir ame Elton Mayo anka human relationship theory or factors influencing the emergence of human relations approach. Discuss kariba and video ra agaku mukahibi apana mene ehara notes kipari download. Karibi chala into start kariba Elton Mayo. Jane, Australian psychologist, sociologist and organization theorist, is best known for his contributions to the human relations movement and the Hawthorne studies. His work had a significant impact on the understanding of human behavior in the workplace. Mayo's theories challenged the prevailing views of his time, which were primarily based on classical management theories that focused on the technical and economic aspects of organizations. The human relations movement, associated with Mayo and his colleagues, emerged in the 1920s and 1930s as a response to the mechanistic and impersonal nature of classical management theories. Here are key aspects of Mayo's human relationship theory. Sanksep men, Elton Mayo के मानवीय संबंध सिद्धांत principle ने कारिस्तल men सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के महत्व पर जोर दिया. Psychological factors in the workplace. Elton K. Adheen ne संगठन के विशुद्ध रूप से यंत्रवत दृष्टिकोण. Human-centered approach से अधिक मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद के प्रबंधन सिद्धांतों और प्रथाओं को प्रभावित किया गया. मेयो के काम ने संगठनों के भीतर क्रमकारी संतुष्टि satisfaction, प्रेरणा और सोशल डायनामिक्स सामाजिक गतिशीलता के महत्व को समझने की नींव रखी. We hope all of all enjoy this video and understand the topic. Now we start by notes. Let's start it. Critical examine the human relationship theory of or Elton Mayo. Elton Mayo को human relation theory देखिबा. तो human relation theory of organization is also referred to as the neo-classical theory. तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीटा सेटा कोन गोटे क्लासिकल नियो क्लासिकल थ्योरी भाबे कोन ताको रेफर करछि. इट हैज फार इट्स बेसिक सेवरल प्रिंसिपल तार किछ मन कोन बहुत सेवरल सिद्धांत बा प्रिंसिपल रहिछि एंड फीचर्स बा वैशिष्ट्य मध्ये रहिछि ऑफ द क्लासिकल थ्योरी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए मॉडिफिकेशन एडिशन सबर्डिनेशन एंड इट इन सम वे एक्सटेंशन ऑफ सम of the principles of the classical theory. It is called neoclassical theory of public administration. तो एटा कोन neoclassical theory होछि कोन public administration रो. नेक्स्ट देखिबा कोन the term human relations refer mostly to relations between the employees and employers which are not regulated by the legal norms. तो जो human relation अच्छी से रिफर्स मोस्टली क्या करछि ना रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज व्हिच आर नॉट रेगुलेटेड माने जो एम्प्लॉय तांको मध्ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप अछि ताको से कोन रिलेशन करछि बिटवीन करछि. द बेसिक असम्पशंस ऑफ द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज दैट फिजियोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्कर एज एन इंडिविजुअल एंड हिज वर्क ग्रुप और टू बी emphasized in every account of organization. Elton Mayo concentrated his attention on the behavior of the workers and their productive capacity. तो एल्टन माय कौन करछनी ना सी ही ताकर जो अटेंशन रहिछि से ता कहा प्रति रहिछि ना बिहेवियर ऑफ द वर्कर मन को व्यवहार एंड देयर प्रोडक्टिविटी ता कोन प्रोडक्टिविटी ता कोन काम कि पर कर परछन ता कैपेसिटी केतिको. ही मेड एन इन डेप्थ एनालाइज ऑफ सच फैक्टरीज एट फैटिग्यू एक्सीडेंट्स प्रोडक्शन लेवल्स rest periods and working conditions of the individual workers in the factories. He started his first experimental study in a textile mill near Philadelphia in 1922. तो 1923 मसीह रे तांकर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी से स्टार्ट करथिले से कोड करथिले ना टेक्सटाइल मिल होथिला फिलाडेल्फिया रे 1923 रे से कोन स्टार्ट करथिले. However, the first major research study was undertaken by Elton Mayo after joining Harvard and it was entailed the first inquiry. The main theme of human relation theory is that humans are not machine माने कोन human मनुष्य machine जंत्र नुह. They are more important than machines. आउ तांकन ना जंत्र म तांके बहुत important अछंती. नेक्स्ट देखिबा
Elton Mayo also advocated the video that workers should be made to come out openly with their needs and encourages to interact freely and without fear with company officials. High morale of the work group was a major determinant of productivity. It led to the emergence of a human relations movements in administration. Next देखिए कौन ना factors increasing the emergence of human relation approach. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन अप्रोच कौन मैंने को फैक्टर जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रही कौन इन्फ्लुएंस कर प्रभावित कर सेवरल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इमर्जेंस ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इन एडमिनिस्ट्रेशन तो देखा से गुड कौन कौन ना फास्ट हूँ इकोनॉमिक डेस्पिरेसन ऑफ 1930 तो 1930 मसीहा जो इकोनॉमिक कौन डेस्पिरेसन से प्रभावित करता द थ्योरी टू सेप in the 20s and 30s 20s and 30 माने कोन 20 सप्ताह 30s रे of the 20th century when there was a general crisis in the capitalist countries माने capitalist countries रे 20 किंबा 30 शतक जो थिला 20 दशक रे से कोन ना capitalist society रे गोटे क्राइसिस देखा होला the problem become acute due to the increased production which result from rapid mechanization reduce physical strain and increase mental stress machine जो कहला ना physical को से reduce कर देला किंतु mental जो थी तो stress को से increase कर देला next यूज कौन ना capital intensive industry तो during this period industry become more capital intensive 20th century हेतला तो a breakdown of equipment strikes and high labor turnover used to cause to monopolies enormous losses. Those gains of monopoly wanted to ensure that their workers should show a dedicated attitude to their work. तापर कौन dedicated worker माने कौन देखली तांगर गोटे dedicated worker देले गोटे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो टेक्नोलॉजिकल मतलब कौन एडवांसमेंट देला टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोड्यूस मेजर चेंजेस इन द एटीट्यूड स्किल्स एंड एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स एज वेल तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ीगला टेक्नोलॉजी बढ़ुसला तार मोर तापर कौन बहुत गुड़ा चेंजेस मध्य आसला सेमानकर लेबर मान जो वर्कर्स थे आटीट्यूड स्किल्स एजुकेशन रे देयर लेवल ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन लेवल थिला एंड प्रोफेशन स्किल रोज कंसिडरेबली दे स्टार्टेड एडवोकेटिंग द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ह्यूमनिकेशंस अप्रोच टू द डिमांड्स ऑफ लेबर फोर्थ हम रिएक्शन अगेंस्ट टाइलरिज्म रिएक्शन कौन होता ना द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच also came into existence as a reaction against the one-side nature of the Taylor system, which regarded the worker as an appendage to the machine carrying out a scientific set of operation mechanically. Taylor system or Taylorism acted as a source of tension source भाव से काम कला for the workers and it did not increase the productivity of labor. आगन labor मानकर प्रोडक्टिविटी को से इंक्रीज कलानी से टेंशन सृष्टि कला नेक्स्ट यूज कौन ना क्लास एगाटोनिज्म एंड पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट्स इन सेवरल कंट्रीज तो एमर्जिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड डॉज and ectonism also played a role in every emergence of the human relations approach. The need for controlling the growing class antagonism also produced the emergence of the human relation approach in administration. The wearing of class antagonism and the result character of the trade union movement in several capitalist countries several capitalist countries ये सब movement है particularly in the United States particularly United States capitalist country accelerated the process of introduction of the human relation approach in industry and business. नेक्स्ट देखिए कौन एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एलिमेंट कौन कौन थे तो सपोर्टर्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच concentrated on three elements जो सपोर्ट थे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रो ताकि तीनोटी एलिमेंट देथिले कोन फर्स्ट होची द इंडिविजुअल सेकंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क ग्रुप नेक्स्ट कोन पार्टिसिपेट मैनेजमेंट तो सो देखिबा द इंडिविजुअल कोन रहिला ना द ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन एडवोकेट्स
द नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम इच अदर प्रत्येक इंडिविजुअल प्रत्येक जन जन भिन्न it differentiates one individual from another on the basis of the personality traits and attitude towards work ତାଙ୍କର ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏଭ୍ରି ୱାର୍କର is a unique person प्रत्येक वर्कर गोटे यूनिक पर्सन और certain skills technical social logical each person has certain hopes and expectations of his job selection along with their working relation human relations among the members of work group are important elements every organization next देखिए कौन social aspect of work group the informal organization तो एथरे कौन रहिबो द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी lay emphasizes upon social aspect of work groups. It focuses attention on the social aspect of human beings. Human beings are gorgeous and social by nature and necessity. This fundamental fact of human nature determines the nature and working of each organization. The formal structures and function of organization are influenced by informal relations among human beings and the attitude and the character of the work of a group कौन group of individual तो ये रहा कौन गोटे सोशल ग्रुप आसेप्ट अच्छी जो वर्क ऑफ ग्रुप कर माने कौन ऑर्गेनाइजेशन गोटे अच्छी तो ऑर्गेनाइजेशन किपर ह्यूमन रिलेशन रोचे ताकू कहुई नेक्स्ट है कौन पार्टिसिपेट मैनेजमेंट तो मिलमिशी मैनेज करवा तो द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एडवोकेट्स द एलिमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेट मैनेजमेंट इन प्लेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय पार्टिसिपेट मैनेजमेंट इन द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो कारण जो एकाथरे मिसी जे कौन गोटे निष्पत्ति नेबा ये भाग नेबा पार्टिकुलर डेटा व्हिच रिलेट्स टू देयर वर्क कंडीशन पार्टिकुलर कौन जा वर्क कंडीशन को रिलेट करतबो आ कौन रहिला ना Just one branded, a contemporary of Elton Mayo, published his book The Function of the Executive in 1989. book published called The Function of the Executive. In it, he also emphasized the human relations aspect of organization by advocating that this of contribution satisfaction equal मतलब योगदान आउ satisfaction equal समानता गोटे हम कहि परिबे बुझी परिबा the capacity of contribution refers to the efforts of members. Regarding the presence of both formal and informal organization, Branded thought that formal organization were artificial system and they grew out of informal organization which were natural systems. Informal organization performs three functions. तो informal organization function कौन तीनोटी performs function करछि तो first होछि enhance communications, maintain the social physiological cohesiveness of the organization by creating relations among members. Informalities and activities allow the members to develop feelings of personal importance and effectiveness. तो next देखिबा human relation approach advocates that the organization should strive to secure in private three objectives. तो human relation approach कौन कहला advocate सपोर्ट कहला जे प्रत्येक जो संगठन रहिछि should strive to secure माने गोटे सिक्योर हेबा दरकार तो प्रैक्टिस थ्री ऑब्जेक्टिव्स ए तीनोटी ऑब्जेक्टिव्स रे से सिक्योर हेबा दरकार कोन कोन ना अचीवमेंट ऑफ प्रिसाइड ऑब्जेक्टिव एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ इट्स कौन मेंबर्स एनकरेजिंग ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड लो ऑब्स्टेकल्स एमंग द वर्कर्स माने प्रोत्साहन जोगाइबा स्टिमुलेशन ऑफ कोऑपरेशन एंड एडवांस ऑफ डिस्ट्रक्टिव कौन मेंबर्स हम कहि परिबा स्टिमुलेशन कौन आखरु ट्रीट करबा जे हां हम एमते कले हम कंपनी ग्रोथ हो हम प्रोडक्टिविटी काम कर परिबा ताहा सब ऑब्जेक्टिव्स हम कहि परिबा द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी प्लेसेस एम्फासाइज अपॉन फैक्टर and informal human relations which get developed in the work groups and association. तो human relation theory जो कौन कहला ना दरकार गोटे फैक्टर मध्य जो ह्यूमन रिलेशन कौन डेभलप हम आ वर्क ग्रुप्स गोटे भल आसोसिएशन आम काम कर तो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी नोट्स जदि आप नोट्स चाहती डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देछि सेठा जॉइन हंतु आपन नोट्स मिल जाए. थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो.